Assalamu alaikum everyone. Today we are going to begin handout 2.1, developing a thesis and supporting arguments. So every writing assignment has at least two purposes. चाहे वो किसी भी content area के बारे में हो, उसमें ये inbuilt दो purposes होते हैं. To teach you to state your case and prove it in a clear, appropriate and lively manner, and to teach you to structure your thinking. So अगर किसी भी आपके subject से related आपको कोई ना कोई written work, written assignment दी जाती है, तो आपसे expectation क्या होती है कि जो आंसर आपने लिखना है उस सवाल के जवाब में वो जो चीज़ पूछी गई है उसके बारे में clearly जो है आपका केस जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो appropriate तरीके से, अच्छे तरीके से एक तो आप present कर सके, और ये किस तरह पॉसिबल होगा कि जब आप अपनी थिंकिंग को स्ट्रक्चर करेंगे. जैसे एक पूरे टॉपिक के बारे में अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है या दो चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन आपने एग्जाम के सवाल में या किसी असाइनमेंट में बड़ी लिमिटेड नंबर वर्ड काउंट में आपने वो सारी बात लिख देनी है, तो देन what will you require कि you think about it, you structure whatever you think and then write it out in a clear appropriate manner कि कुछ उस पे इम्पॉर्टेंट चीज रह भी ना जाए, लेकिन ये कि जितनी वर्ड लिमिट है और जितनी आपसे रिक्वायर्ड राइटिंग है आप उतने ही में अपना पूरा जो आंसर है क्लियरली उसको दिखा दें लिख के. Consequently, all expository writing in which you formulate a thesis and attempt to prove it is an opportunity to practice rigorous, focused thinking habits that can result not only in better papers, but in sharper analytical skills across the border. अब वो राइटिंग कि जो आपने अपनी तरफ से अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, एक्सपोजिशन के लिए कोई आप समझे कि आपको फ्री राइटिंग ऐसे टाइप की कुछ राइटिंग अगर आपसे रिक्वायर्ड हो, उसमें आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने थिंकिंग हैबिट्स और एनालिटिकल स्किल्स को इस तरह से यूज करें कि बहुत कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग आए कि जिसमें एक मेन आपका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग थीसिस हो, स्ट्रॉन्ग कोई आपका टॉपिक हो, और फिर उसको आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं वो सारा मटेरियल उस पीस ऑफ राइटिंग में मौजूद. कोई भी बात जो आप करें वो इस तरह की ना लगे कि दिस इज बेसलेस या इस पे तो यकीन किया नहीं जा सकता या इन्होंने जो बात लिखी है वो तो गलत है. तो इट शुड बी इन सच अ मैनर that readers, when they read it, they pay attention to it and they are willing to accept whatever you have written. So अब इसमें अभी हम पैराग्राफ राइटिंग या एसे राइटिंग या स्टोरी राइटिंग उन चीज़ों को हम बाद में एड्रेस करेंगे. अभी आपको एक जो चीज़ बतानी है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप लिखें उसको फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट कैसे करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हम इस लेक्चर में उसकी लेंगे. तो राइटिंग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द थीसिस. अब आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आप समझें कि आपके पूरी जो ओवरऑल राइटिंग है उसका मकसद और उसका टॉपिक और आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो बयान कर देता है उस राइटिंग के शुरू में थीसिस स्टेटमेंट. तो ना सिर्फ उसमें टॉपिक बताया जाएगा बल्कि ये कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं एक मुकम्मल जुमले में वो बात बता दी जाती है, और फिर आगे जाके उसको आप सपोर्ट करते हैं, उसकी शक्ल बनाते हैं. और ये ज़्यादा अब जो है आपकी उस तरह की असाइनमेंट्स एंड रिसर्च पेपर्स एंड अदर पीसेस ऑफ टेक्निकल एंड एकेडमिक राइटिंग, ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जब लिखें तो स्पेसिफिक चीज जिसके बारे में आप लिख रहे हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं वो दोनों चीजें पीस ऑफ राइटिंग के शुरू में ही क्लियर हो जाएं. एंड देन व्हेन द रीडर प्रोग्रेसेस तो उनको पता चल जाए ओके ये जो बात कह रही हैं ये उन्होंने इसका प्रूफ दिया है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात बढ़ाई है, इस तरह से कंक्लूड की है, ओके मुझे इनकी पूरी जो है बात समझ में आ गई. तो राइटिंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेंटेंसेस दैट सपोर्ट द थीसिस. It is during these early stages of writing, particularly in the identification of supporting arguments, that students are most likely to flounder and procrastinate, and when the strength of a paper's thesis is frequently diluted for lack of rigorous thinking.
اب اگر آپ کو میں کسی چیز پہ ایک اوپن اینڈیڈ ایسے لکھنے کو کہوں یا ریفلیکٹیو رائٹنگ لکھنے کو کہوں تو بہت سے آپ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھیں گے آئیڈیاز کے لیے، فلاؤنڈر کریں گے، پروکراسٹینیٹ کریں گے، آپ لوگ اس کو سر سے اتارنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس میں دیر بھی کریں گے کہ اچھا دیکھی جائے گی. اور پھر جو بھی آپ نے ایک اچھا کوئی نہ کوئی اس کا تھیسس سوچا ہو، ٹاپک سوچا ہو، تو پھر بھی اس کو شروع میں چونکہ آپ نے اچھی طرح سے تھنک تھرو نہیں کیا تھا، آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس میں اور آگے جا کے کیا کیا آئے گا، تو وہ اینڈ تک جاتے جاتے بہت ایک ویک پیپر بن جاتا ہے. تو کس طرح سے ایک پیپر کو، کس طرح سے ایک کسی بھی پیس آف رائٹنگ کو آپ اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے اب کہ آپ ارسطاٹل کا جو ایک میتھڈ ہے آف ڈسکورنگ آرگیومنٹس، اس کو یوز کر کے help identify and develop a strong thesis. You may adapt this method to any non-fiction writing, including essays, research papers, book reports, and critical reviews. تو یہ سب اگر آپ نے جب لکھنے ہوں گے، ایسیز بھی، یا آپ آگے جا کے آرٹیکل لکھیں گے یا آپ کی ریسرچ میں بھی، تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ میں جس چیز کے بارے میں لکھ رہی ہوں اس کو آگے میں نے آرگیومنٹ سے سپورٹ کس طرح کرنا ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ پیس آف رائٹنگ ہو اور جو بھی اس کو پڑھے وہ اس سے آپ سمجھیں کہ کنونس ہو جائے یا اس سے انفلوئنس ہو جائے. تو اب فالوئنگ آر دا اسٹیپس کامن ٹو اینی کائنڈ آف نان فکشن رائٹنگ. یہ 6 اسٹیپس ہیں جس میں سے پہلا اسٹیپ ہے چوزنگ اے سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اب تھیسس یہاں پہ جو مراد ہے یہ آپ کا وہ تھیسس نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں نے ابھی بی ایڈ کے اینڈ پہ جا کر اپنے ڈگری کمپلیشن کے لیے ریسرچ کرنی ہے. تھیسس کسی بھی پیس آف رائٹنگ کا اوپننگ سینٹینس ہوتا ہے کہ جس میں اس ٹاپک کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ لکھیں، اور اس کے بارے میں آپ کا کوئی پازیٹیو ریمارک ہے، نیگیٹو ریمارک ہے، آپ اس کے خلاف بات کرنے والے ہیں، اس کے حق میں بات کرنے والے ہیں، یا اس کے بارے میں ایگزیکٹلی کیا دینے والے ہیں، ایک کمپلیٹ سینٹینس میں آپ وہ اپنا، آپ سمجھیں کہ جو انٹینشن یا مدعا آپ اپنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقی رائٹنگ جو ہے وہ اسی کو پروف کرنے میں لگ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے it's not a phrase, it's not an incomplete sentence, it is a complete sentence. جب آپ کسی ایسے کا یا اس کا ٹائٹل دیتے ہیں تو ٹائٹل عموماً جو ہے وہ ایک شارٹ فریز ہوتی ہے کہ جو انکمپلیٹ ہوتی ہے، ایک مکمل سینٹنس نہیں ہوتی، اس کی پوری سینس نہیں بن رہی ہوتی، لیکن وہ ایک چھوٹی سی جو ناؤن فریز ہوتی ہے وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ پوری پیس آف رائٹنگ کس چیز کے بارے میں. فار انسٹنس، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پولوشن کے بارے میں بات کریں تو خالی آپ انوائرمنٹل پولوشن ٹاپک کے طور پہ دے سکتی ہیں، اور مجھے پتا ہوگا کہ اچھا جو یہ ایسے پڑھنے میں جا رہی ہوں یہ انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں ہے. لیکن جو اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ آپ سمجھیں کہ اس ایسے کا پہلا سینٹنس ہوگا کہ جس میں آپ ایک کمپلیٹ سینٹنس میں مجھے یہ بتا دیں گی کہ انوائرمنٹل پولوشن سے ریلیٹڈ آپ کیا بات کر رہی ہیں، اور آپ نے اس کے حق میں بات کرنی ہے یا اس کے اگینسٹ بات کرنی ہے، یا کیا چیز آپ پروف کرنے کو جا رہی ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں لکھ رہی ہوں ایسے آن انوائرمنٹل پولوشن، تو شاید میرا تھیسس سینٹنس، پہلا سینٹنس یہ ہوگا کہ environmental pollution in Pakistan is one of the leading causes of anxiety and stress. ٹھیک ہے، اب اس اسٹیٹمنٹ میں نے کیا کہہ دیا کہ environmental pollution میں نے اسپیسیفائی کر دیا in Pakistan is one of the leading causes، کہ وہ ایک میجر وجہ ہے of stress and anxiety. اور اب باقی کا جو ایسے ہوگا میرا ریڈر یہ جان جائے گا کہ باقی کے ایسے میں اسی جملے کو ڈیفینڈ کروں گی، اسی کو پروف کروں گی، اس کے ساتھ آرگیومنٹس دوں گی کہ جس کے ذریعے میرا ریڈر مان جائے گا کہ ہاں انوائرمنٹل پولوشن اسٹریس اور انگزائٹی کاز کرنے میں ایک بڑا فیکٹر ہے. تو تھیسس سینٹنس، تھیسس اسٹیٹمنٹ is the full sentence with a full stop at the end. It is not a phrase, it's not an incomplete sentence. یہ یوزلی پورے ایسے کے پہلا یا دوسرا سینٹنس اس میں یہ آتا ہے اور آپ کمپلیٹلی اس کو بناتے ہیں. اس کے لیے سبجیکٹ کیسے آپ چوز کریں، اس کی شکل کیسے دیں، اس کے بارے میں ہم جنرل ایک بات کریں گے. سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے چوزنگ اے سبجیکٹ. فار انسٹنس، یور انسٹرکٹر asks you to write an essay about a holiday experience. چھٹی کا کوئی آپ نے مضمون لکھنا ہے.
Within this general subject area, you choose a subject that holds your interest and about which you can readily get information. तो आपने एक चूज कर लिया कि जी अच्छा मैंने इस एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, और वो क्या इंफॉर्मेशन थी और क्या वो टॉपिक था कि you were in the market on the morning of a public holiday and witnessed some unusual behavior. आपने छुट्टी वाले दिन बाहर मार्केट में थे और आपने कुछ अनयूजुअल देखा. वो क्या था कि एक प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टेड रिजल्टिंग इन इंजरीज टू बायस्टैंडर्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज टू नियर बाय कार्स. तो एक हंगामा मच गया, कोई एक जैसे जुलूस निकलना शुरू हो गया स्टूडेंट्स का, और जिससे पास खड़े लोगों को चोट लगी और करीब की जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा. यू विश टू राइट अबाउट दिस. तो सबसे पहले तो आपने ये टॉपिक चूज कर लिया. अब ये टॉपिक बड़ा ब्रॉड है, अनडिफाइंड है, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर है कि ये मैंने लिखना है. आप इसको अपने पास एज अ नोट एक लाइन में 2 लाइन में लिख सकते हैं कि ओके मैंने स्पेसिफिकली इसकी बात करनी है कि ये जो हुआ था. ठीक है, अब आपने टॉपिक चूज कर लिया, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. अब आपने इसको लिमिट कैसे करना है. फॉर इंस्टेंस, अब आपने इस टॉपिक के बारे में जो है लिखें, इसको आप नाम कैसे देंगे. आप इसको जनरल स्टूडेंट बिहेवियर कह देंगे तो ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं ना वो एक खास अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स का जो पब्लिक हॉलिडे पे हुआ और जिसका रिजल्ट जो है वो ये सारा कुछ हुआ. तो आपने खाली स्टूडेंट बिहेवियर अगर कह दिया तो बहुत तो ब्रॉड हो जाएगा. स्टूडेंट बिहेवियर इन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन स्कूल्स, इन एट होम, वो क्या क्या स्टूडेंट बिहेवियर से. सो यू नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन जिससे पता चले कि आपका टॉपिक किस स्टूडेंट बिहेवियर के बारे में है. तो स्टूडेंट बिहेवियर वुड नेसेसरी इंक्लूड बिहेवियर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, and this would be very well fill a book and require a master's degree in psychology. तो ये इसके लिए तो आप एक बुक भी लिख छोड़ें, आपके पास मास्टर्स डिग्री भी हो एक साइकोलॉजी में, फिर भी स्टूडेंट बिहेवियर को कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. और सिंपली कॉलिंग योर सब्जेक्ट अ पब्लिक हॉलीडे वुड बी मिसलीडिंग. और अगर आप खाली जो है पब्लिक हॉलीडे करें, अब उस पब्लिक हॉलीडे पे क्या एक्सपीरियंस था, अच्छा था, बुरा था, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो अकेला उस तरह से यूज करना भी गलत है. अब आप you may decide to limit the subject to student behavior on a public holiday. ठीक है, अब student behavior on a public holiday ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो अब उसमें जो है अभी आप समझे कि टाइटल चूज कर रहे हैं, फिर उसका भी थीसिस स्टेटमेंट हम बाद में बनाएंगे. तो टाइटल आपका स्टूडेंट बिहेवियर ऑन अ पब्लिक हॉलिडे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ये. और फिर उसको अगर आपने मोर स्पेसिफिक करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अनरूली कॉलेज स्टूडेंट बिहेवियर सच एज दैट विटनेस इन फ्रंट ऑफ कलमा चौक ऑन अ पब्लिक डे, पब्लिक हॉलिडे. तो इसको और स्पेसिफाई करने से क्या पता चल गया कि पढ़ने वाले को समझ आ गई कि वो बच्चे कौन थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कहाँ था, कलमा चौक था, पब्लिक हॉलिडे पे था, और कैसा बिहेवियर था, अनरूली या जो है वो तंग करने वाला किसी ना किसी तरह से बिहेवियर था. ठीक है, अब ये टाइटल नहीं है, अभी आप अपने सब्जेक्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आपने लिखना है वो आप अपने दिमाग में कर रहे हैं. अब आपने सिर्फ इसको लिमिट किया, स्पेसिफिक किया, और अब अपना थीसिस बनाने में, थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए आप रेडी हैं. So while your subject may be a noun phrase such as the one above, your thesis must be a complete sentence. तो आपका टाइटल जो है वो ये हो सकता है कि स्टूडेंट बिहेवियर ऑन अ पब्लिक हॉलिडे या अनरूली बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लंबा छोटा इस तरह का नाउन फ्रेज हो सकता है. नाउन फ्रेज ये कि यानी कि वो टाइटल की शक्ल में उसको उन्वान दे, जिसको उन्वान कहते हैं ना. उन्वान कभी भी फुल सेंटेंस नहीं होता. तो जैसे आप कहें कि जी मौसम सरमा की छुट्टियां, बस का सफर, तो ये पूरे सेंटेंसेस तो नहीं है ना. लेकिन जो थीसिस स्टेटमेंट है, जिस तरह से मैंने आपको कहा, it must be a complete sentence that declares where you stand on the subject. This is the most important part, कि आप लोगों ने ये जरूर बताना है कि आपकी उसके बारे में क्या राय है. So a thesis statement should almost always be in the form of a declarative sentence. तो जिस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं कि मैं ये कहती हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस की फॉर्म होनी चाहिए. तो अगर आप फॉर इंस्टेंस बिलीव करते हैं दैट सम ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ कलमा चौक ऑन अ पब्लिक हॉलिडे वाज वेरी बैड, तो आपकी ओपिनियन ये है कि वो बिहेवियर बहुत बुरा था, तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट कैसी नजर आएगी? इस तरह की हो सकती है कि स्टूडेंट बिहेवियर सच एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ कलमा चौक ऑन अ पब्लिक हॉलिडे is an embarrassment to the college community.
کہ کالج اسٹوڈنٹ تھے تو ان کا بیہیویئر اس طرح تھا کہ وہ بری طرح ریفلیکٹ کرتا ہے, امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو سوچ کے بھی آپ کو. تو یہاں سے پتا چل گیا کہ آپ سمجھتی ہیں ایسا بیہیویئر بہت برا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. یا پھر کنورسلی اپوزٹ وے میں آپ شاید سمجھتی ہوں کہ بہت برا نہیں تھا, تھوڑا برا تھا, تو آپ کا جو ہے آپ اس کے بارے میں پھر یہ لکھ سکتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بیہیویئر سچ ایز ڈیمونسٹریٹڈ ان فرنٹ آف کلمہ چوک آن پبلک ہالیڈے واز ناٹ ریئلی سو بیڈ ایز دا نیوز پیپر میڈ اٹ آؤٹ ٹو بی, کہ جتنا وہ نیوز پیپرز میں بتا دیا گیا تھا اتنا برا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو وہ انیشیل ڈیکلریٹو سینٹینس ہوگا نا, وہ آپ کی پوزیشن کو بتا دے گا کہ آپ اس کے بارے میں لکھنا کیا چاہتی ہیں, اور پھر بعد میں آپ اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی پروف اور اس کے حق میں جو بولنا چاہیں وہ بولیں. تو یو ہیو ٹو انیشیلی میک یور پوزیشن ویری کلیئر. ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے, اب آپ کس طرح سے اس کی آرگیومنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈیزائن کریں گی. اب اس میں جو ہے آپ کو بہت سارا مٹیریل چاہیے ہوگا کہ آپ نے اس کو سپورٹ کیسے کرنا ہے. تو Aristotle taught his students to examine any claim by discovering arguments. Discovering arguments کس طرح سے کی جاتی ہیں کہ اپنے آپ سے سوال پوچھ کے برین اسٹارمنگ کر کے تو آپ ان کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو اور پھر اس میں سے چھانٹی کر کے آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ایسے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا. فار انسٹنس آپ ایسا سوال ان سے پوچھ لیں کہ جو اس کو ڈیفائن کرے. ڈیفائن کیسے کرے کہ what is good behavior, what is bad behavior, what is appropriate behavior on a public holiday, what is appropriate behavior in other settings. So آپ یہ سوال اپنے آپ سے اگر پوچھیں کہ اچھا بیہیویئر برا بیہیویئر کیا ہے, تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ پبلک ہالیڈے پہ اچھا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے یا دوسری سیٹنگز میں, اور اس دن کیا غلط ہوا کیا صحیح ہوا. تو اس سے آپ کو اپنی آرگومنٹ کے حق میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پروف مل جائے گا اور وہ آپ ایڈ کر سکیں گے. یا پھر آپ کمپیریزن اور سملیرٹی کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہاؤ واز دا بیہیویئر آن دا پبلک ہالیڈے سملر ٹو بیہیویئر ان ایئرز پاسٹ, کہ پرانے وقتوں میں گزشتہ سالوں میں اسی طرح پبلک ہالیڈے پہ اس طرح کا کون سا ایسا بیہیویئر ہوا کہ جو اب سے بہت سملر تھا. ہاؤ واز دس بیہیویئر سملر ٹو بیہیویئر ان ادر سٹیز اور ٹاؤنز آن دیٹ ڈے. تو یا پھر آپ سملیرٹی یہ دیکھیے کہ اسی دن دوسرے شہروں میں کس طرح کا بیہیویئر ہوا. سملیرٹیز بھی دیکھ سکتی ہیں آپ, ڈس سملیرٹیز بھی دیکھ سکتی ہیں. وہی دو سوال کہ کس طرح سے وہ ڈفر کرتے تھے بیہیویئر فرام دا ایئرز پاسٹ اور فرام بیہیویئر ان ادر سٹیز. تو آپ وہ کمپیریزن کر کے کچھ پوائنٹ لکھیں گی تو آپ کے پاس پوائنٹس آ جائیں گے کہ اچھا اس طرح سے ڈفرنٹ تھا, اس طرح سے ڈفرنٹ تھا, اس طرح سے سملر تھا, اس طرح سے سملر تھا. یا پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سملر ڈسملر کی بجائے ڈگری کس حد تک سملر تھا یا کس حد تک ڈسملر تھا. تو what degree was student behavior worse than in the past year, کہ پہلے سے زیادہ بدتر کیسے ہو گیا. worse than other parts of the city, کہ دوسرے شہر کے دوسرے حصوں کی مقابلے میں یہ کلمہ چوک والا انسیڈنٹ یہ زیادہ برا کیوں تھا. پھر آپ ان پوائنٹس کو لکھیں گی تو وہ آپ کی ایک سپورٹنگ آرگومنٹ کہ اچھا اس طرح سے یہ زیادہ برا تھا, اس طرح سے زیادہ برا تھا, یا کم برا تھا, دونوں طرح سے آ سکتے ہیں. تو ایک طریقہ ہو گیا یہ کمپیریزن والا. دین آپ اس کی ریلیشن شپ کاز اینڈ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے گڈ بیہیویئر ہوتا ہے اور گڈ بیہیویئر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یا بیڈ بیہیویئر کس وجہ سے ہوتا ہے اور بیڈ بیہیویئر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. سو what were the specific results of the behavior on the public holiday, what were the specific causes of the behavior on the public holiday. تو cause and effect ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو بہت سارا پروف اور آپ کو آرگیومنٹس مل جائیں گے. دین آپ اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھ سکتی ہیں کہ کن حالات میں یہ واقعہ ہوا. سو ہیز دس کائنڈ آف بیہیویئر اکرڈ ان دا پاسٹ. اگر ایسا بیہیویئر پاس میں ہوا تو آپ کمپیئر پھر کریں کہ ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز اور ابھی کے سرکمسٹانسز میں کیا فرق تھا. شوڈ دس بیہیویئر بی پرمیٹڈ ان دا فیوچر, اور یہ اگر فیوچر میں ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. what is possible, that is in this case, is it possible for students to behave appropriately even if bored or provoked, کہ اگر ان کے ساتھ وہ بور بھی ہوں تب بھی شرارت میں اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, یا پھر ان کو کوئی پرووک کر دے یا چھیڑ دے یا کسی بات پہ ان کو تنگ کرے تب وہ ایسا بیہیویئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا پاسبلٹیز ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نہ
किसी चीज के रिएक्शन में ऐसा बिहेवियर शो करें. या इज इट पॉसिबल फॉर मर्चेंट्स और बायस्टैंडर्स टू अब्सॉर्ब द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज. अब इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अगर हो जाए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा, किसी को भी नुकसान पहुंचा, तो कौन इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, उसकी कॉस्ट को कौन अब्सॉर्ब. अब इस तरह के सवाल पूछ पूछ के आप ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके पास बहुत सारा मटेरियल पॉइंट आ जाएगा कि आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जब आप ये इतनी सारी क्वेश्चनिंग अपने आप से करें तो आपके मे भी दिमाग में ऐसी बात आए कि जो आपने इनिशियल यहाँ पे जब मोटा मोटा टॉपिक बनाया था तब आपके जहन में वो पॉइंट ना आए हों. कि जैसे आपने अपने टॉपिक को लिमिट किया, स्टूडेंट बिहेवियर की बात की, ये की, तो उस वक्त आपके जहन में एक इंप्रेशन हो कि हाँ ये तो बिल्कुल स्टूडेंट की गलती थी. लेकिन जब आपने अपने सवाल जवाब पूछे कि अच्छा पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किस वजह से हुआ, कॉज एंड इफेक्ट के सवाल जवाब पूछे, सर्कमस्टांसेस के सवाल जवाब पूछे, मे बी किसी स्टूडेंट के साथ किसी ने बदतमीजी की, किसी ने किसी को धक्का दिया, तो वो रीजन जो है वो शायद इन सवालों के जवाब में आपके सामने और तरह से आ जाए. तो फिर आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने थीसिस को रिवाइज कर लें. ठीक है. तो अब ये अ थीसिस स्टेटमेंट है जो आपका, ये आपने ऑब्जेक्टिवली जो बनाया है, इसको अब आपने बाद में योर थीसिस स्टेटमेंट करना. क्यों? क्योंकि आप एग्जामिन करते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट को अरिस्टोटलियन मेथड के थ्रू एंड यू मे डिस्कवर दैट यू वर रॉन्ग. At this point, you should either revise your thesis or choose another subject and begin again. तो अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने आ गए हैं कि जो आपके पहले थीसिस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करते हैं या वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको रिवाइज कर लें. Revising your opinion in light of convincing evidence is the beginning of wisdom. ठीक है. तो ये आपकी समझदारी और आपको एक मेच्योर राइटर बनाने में हेल्प करेगा कि इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ रिवाइजिंग योर थीसिस स्टेटमेंट. और ये कभी नहीं होता कि जो शुरू में आपने सोच लिया था वही उसी तरह से प्रोग्रेस हो. अगर आप अपने शुरू की थीसिस स्टेटमेंट से ही जुड़े रहें, इवन दो कि आपको पता है कि आगे इसकी अच्छी आर्गुमेंट्स नहीं आएंगी, तो फिर ये कि डिफिकल्ट टू डिफेंड हो जाएगा, कि वो इतना उसमें बात में वजन नहीं रहेगा आपके लिए. तो फिर आपने अब जो लास्ट स्टेप आ रहा है क्या है कि आपने ये आइडियाज यू गैदर यूजिंग द एरिस्टोटल्स मेथड, construct 3 to 5 topic sentences that support your claim. वो आप लिख लें. ठीक है. और फिर ये टॉपिक सेंटेंस जो होंगे एक स्ट्रक्चर देंगे आपके बाकी रेस्ट ऑफ योर पेपर को. You will further support each with examples and citations from personal interviews, newspaper articles or other appropriate references. तो आप examples in the topic sentences in जो है मेन आपने जो thesis लिखा उससे related कहाँ से ले सकते हैं आप, किसी का इंटरव्यू उसमें शामिल कर सकते हैं, आर्टिकल या कोई इस तरह की दूसरे रेफरेंसेस को आप साइट कर सकते हैं. साइटेशन का मतलब है कि आप कोटेशन वगैरह दे के उसको सपोर्ट कर सकते हैं कि माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग देयर एंड शी सेड दैट, कि फिर उसके आंखों देखा हाल जो है आप पूरा शामिल करें. तो दैट कैन बी एन अ रेफरेंस, इट कैन बी एन एडेड प्रूफ. तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको लिखूं कि जी मैंने ये सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं अपना थीसिस सेंटेंस लिखना चाह रही हूँ, तो थीसिस स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है. The protest, was not caused by the students themselves. Rather, an elderly man pushed a girl student, causing her to move away suddenly, and a chain reaction occurred in the line waiting at the bus stop. अब इसमें ये एक और है कि जी वो बात नहीं है कि बच्चों ने हंगामा शुरू किया या प्रोटेस्ट शुरू किया. ओरिजिनल वजह क्या थी कि एक बड़ी उम्र के आदमी ने एक लड़की को, स्टूडेंट लड़की को पुश किया, वो एकदम पीछे हटी, पीछे और लोगों को धक्का पड़ा और उससे एक बेहंगम जो है चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया. सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो शायद दींगा मुश्ती स्टार्ट हो गई, यहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया है और इसकी वजह थी, ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया. या फिर आप इस तरह की उसके बारे में बात करें कि ये सारा आप सर्कमस्टांसेस देखें, तो फिर उसकी नज़र में ये आप एक चीज़ प्रपोज करें कि एडिशनल पुलिसमैन would only increase tension in the downtown area, making altercations more likely. कि अगर ऐसी जगहों पर ज्यादा पुलिसमैन खड़े कर दिए जाएंगे तो मजीद जो है टेंशन बढ़ेगी और फ्यूचर में ऐसे अल्टरकेशंस, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने के इम्कान हैं कि स्टूडेंट्स के थोड़े से बिहेवियर को भी एकदम उसका रिएक्शन अगर आप ज्यादा दे दें तो वो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बैकफुट पे आ जाएंगे या ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे या जो है डिफेंसिव होके और इस तरह की हरकतें करेंगे. तो दिस इज नॉट अ गुड सजेशन. So as you continue to draft your paper, you will of course revise these sentences as necessary.
to more precisely reflect your ideas and the support you gather for them. जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आप सेंटेंसेस को अपने लिखने के अंदाज के साथ रिवाइज करेंगे, लेकिन आपके पास वो आर्ग्यूमेंट्स मौजूद होंगी जो आपके थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती होंगी. बाय दिस टाइम यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट एंड नो वेयर यू वांट टू गो विद इट. It will now be possible for you to find enough additional supporting materials to complete your essay. ठीक है जी, तो this was how you initially began to write a strong thesis, strong topic sentence. फिर जिसमें आपने क्या करना है, पहले आप चूज करेंगे सब्जेक्ट, उसको फिर आप लिमिट करेंगे कि किस चीज पे स्पेसिफिक मैंने जोर देना है, उसकी बेसिस पे आप एक मुकम्मल सेंटेंस में थीसिस स्टेटमेंट क्राफ्ट करेंगे. फिर कैसे आपने उसको सपोर्ट करना है आप आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद आप रिवाइज करेंगे अपने थीसिस स्टेटमेंट को. एंड द लास्ट स्टेप इज दैट यू विल क्राफ्ट अ टॉपिक सेंटेंस दैट सपोर्ट द thesis statement. ठीक हो गया? So this is how you proceed with making a limited but very strong thesis statement and then coming up with arguments for it. चलें, एक चीज तो ये है, you can ask me questions regarding this. और अब आपका एक और काम जो है वो ये है कि I am going to share another handout with you, or which is handout 2.2 terms related to writing. तो डेफिनेशंस ऑफ राइटिंग टर्म्स वाला आपका ये एक हैंडआउट है जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है. और आपने इसमें से डिफरेंट टर्म्स बहुत सी आप जानते भी हैं, लेकिन कुछ टर्म्स होंगी जो नई होंगी. आपने इसको पूरे को गो थ्रू करना है और फिर मुझसे इससे बारे में जिसमें कंफ्यूजन हो वो आपने डिस्कस करनी है. बट दीज आर द डिफरेंट राइटिंग टर्म्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. फॉर इंस्टेंस सबसे पहले है अलिटरेशन. तो alliteration क्या है? The repetition of the same sound in successive words usually, but not necessarily in the beginning. तो क्या किया जाता है, नज़मों में alliteration बहुत यूज होती है कि एक ही साउंड को बार बार वर्ड्स में जल्दी यूज करके एक सिमिलर रिदम टाइप की चीज पैदा की जाती है. जैसे blown buds of barren flowers, तो blown buds of barren flowers, तो ब साउंड की रिपीटेशन से एक उसमें म्यूजिकलिटी लेके आते हैं, इसको alliteration कहते हैं. पोएट्री में भी यूज होती है, स्टोरी टेलिंग में भी यूज होती है. Then apostrophe क्या होती है? Apostrophe, a figure of speech in which the absent is addressed as if present, the dead as if alive, or the inanimate and the abstract as if animate or concrete. तो apostrophe क्या होती है कि हाय मेरी जिंदगी, इस तरह से आप करते हैं ना, कोई ऐसी चीज जो ना प्रेजेंट हो या कोई चीज जो जिंदा भी ना हो, या एक वो कोई ऑब्जेक्ट है कि हाय मेरी गाड़ी मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, या हाय मेरा कमरा काश मैं अपने कमरे में होती. तो इस तरह से आप जरा किसी इमोशन का इजहार करते हैं. तो दिस मे बी यूज्ड इन ड्रामेटिक राइटिंग, इट मे बी यूज्ड इन some kind of expository writing भी टू, के जिसमें आप किसी इशू के बारे में बात कर रहे हैं और मे बी यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमोशन. इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं. एक अपॉस्ट्रोफी एस होता है, जो अपॉस्ट्रोफी एस की किसी की ओनरशिप शो करने के लिए, तो आप कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस फिजा हैं, तो फिजाज book is on the table. तो वो जो apostrophe s लगाते हैं वो भी apostrophe, same spelling, but in writing terms apostrophe is when you address something which is not animate as if it were animate. फिर argumentation क्या होती है कि जब आप reasons और arguments present करते हैं in logical way तो उसको argumentation कहा जाता है. Arrangement क्या होती है? The order in which details are placed or organized in a piece of writing. अब ये arrangement is very important. आप simple से complex की तरफ जाते हैं, कभी कभी आप simple से difficult की तरफ, या first second step की साथ आप अपनी arrangement करते हैं. For instance अगर आप recipe लिख रहे हैं तो आप एक खास order में steps लिखेंगे. अगर वो steps आगे पीछे हो गए, arrangement आगे पीछे हो गई, तो that would affect the recipe. Then audience कौन होता है? Balance किस तरह से आप करते हैं words and phrases. So these are different terms which are generally used in writing और जिसके साथ आपकी awareness होनी ज़रूरी है. So I want you to read them on your own, and in the next class when we are face to face in some way, तो आपने फिर मुझे बताना है कि if some of the terms are difficult to understand, or maybe उसकी आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए हो, या मे बी उसमें किसी ना किसी तरह से क्लैरिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम है, then we can go through them together. So this was all for today, and I hope you understand whatever I have made you read and whatever you have had to listen.
And inshallah, I'll see you in the next lecture. Thank you.